Hello everyone. Hope you all are doing good today. So today I'm going to talk about the most common problem which can be seen in the people nowadays, especially in the women's. You can see after like post pregnancy, most of the women face this problem, and this is very common. That is thyroid. So today we'll talk about thyroid. So thyroid is a gland. It is like a butterfly shape which is found in our neck, जिसकी functioning जो होती है हम लोग के brain से होती है, which is hypothalamus and pituitary gland. Hypothalamus is a appetite regulator जो हम लोग के appetite को control करता है, और जो pituitary gland को message करता है when your thyroid gland is not working properly, not functioning properly, तो वो message करता है pituitary gland को to which releases the hormone of TRH to send it to pituitary gland to release more of TSH. TSH is nothing but thyroid stimulating gland which is released by pituitary gland. So TSH again thyroid gland के पास जाता है, and which gives the message to thyroid gland to release more of T4. So T4 is nothing but your thyroxine hormone, T3 and T4 जिसकी functioning जो है वो आपके thyroid gland से control की जाती है. So if there is any imbalance functioning हुई या फिर कुछ भी hormones में जो problem हुई thyroid gland को produce करने में, so it is regulated by your hypothalamus. और जब भी आपकी cells की production कम हो जाती है या functions करना बंद कर देते हैं, this is the reason कि आपके T3 and T4 hormones की functioning भी slow हो जाती है, जिसके कारण you face hypothyroidism का problem और hyperthyroidism problem. So hypothyroidism is something which can be seen in women's very commonly nowadays, जिसके कारण आपका metabolism rate जो है वो slow हो जाता है and you tend to gain weight. Reason being आप उतना जल्दी आपका metabolism fast नहीं हो पाता as compared to normal people. So you are gaining weight because आपका खाना जो है, जो भी आप whatever you are eating, वो आपका proper digest नहीं हो पाता. So that is the reason you are gaining your weight. Okay, and hypothyroidism is something where your thyroid gland is not producing sufficient amount of hormones which is required by your body. And hyperthyroidism की बात करें तो hyperthyroidism is something where your thyroid gland is producing excessive amount of thyroid hormones which is not required by your body. तो उसमें आप very oftenly like very drastically weight loss करना start कर देते हैं. So I'll talk about hypothyroidism which is most commonly can be seen in the people nowadays जो weight gain में problem करता है आपकी, आप drastically weight gain करते हैं. So today we'll talk about what foods you should stop, what foods you should have in proportion, and what things in the lifestyle you need to change. Okay, first we will talk about the foods which you should stop is highly processed foods and supplements. So highly processed foods like packed foods हो गए हैं आपके, and like sugary drinks हो गए, cakes हो गए, biscuits हो गए. Okay, so that you should be avoided having that in your daily diet. Then again we'll come to supplements, mostly iodized iodine and selenium which is required by your body. Adequate amount of selenium and iodine आपकी requirement होती है body में, but again you should not consume excessive amount of supplements, selenium supplements or iodine supplements without it is prescribed by the doctor. So ये तो हो गया जो आपको बिल्कुल stop करने हैं. Now we will talk about the foods which you should limit the consumption of. So we will talk about first of all the veggies which are having glycogen and
crucifer veggies which are having गाइट्रोजन्स इन इट. तो क्या गाइट्रोजन्स जो हम लोग के थायराइड के जो ग्लैंड होता है उसके जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी फंक्शनिंग में हम लोग को इंटरफेयर करता है. सो इट इज़ एडवाइजेबल कि गाइट्रोजन्स जिस भी लाइक वेजीज में है और सोया में है वो अवॉइड किया जाए. इट्स नॉट दैट यू टोटली हैव टू कट ऑफ फ्रॉम योर डाइट, but yes, you have to limit the consumption, like you can have once in 10 days or 15 days, because mostly people को they have question nowadays कि हम लोग को crucifer veggies stop कर देनी चाहिए क्या डाइट से. So stopping is not an idea, it's just you have to reduce the consumption and you are good to go. Then you should reduce the consumption of soya, लाइक सोयाबीन ऑयल हो गया या सोया ग्रैन्यूल्स हो गए और सोया चंक्स हो गए, टोफू हो गया. यू शुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ दैट अगेन बिकॉज इट हैज़ गाइट्रोजन इन इट, सो इट विल इफेक्ट योर फंक्शनिंग इन thyroid gland. Then you should reduce the consumption of certain beverages like coffee हो गया, tea हो गया. You can consume in the proportion. It's not कि आपको cut off करना है, आपको थोड़ी consumption reduce करनी है. Then we will come to a food that contains gluten. Because gluten is again which interferes in your thyroid gland. So whole wheat flour हो गया, whole wheat breads हो गए, pasta हो गया, you should reduce the consumption. Instead you can switch to multigrain. Multigrain आप ले सकते हैं because it is gluten free. And if you are facing bloating problem, then you can again switch to gluten because कई लोगों की बॉडी को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं ग्लूटेन फ्री फूड. सो इट इज़ एडवाइजेबल इनिशियली अगर आप स्विच करते हैं एंड यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ ब्लोटिंग प्रॉब्लम या वाटर रिटेंशन प्रॉब्लम, सो अगेन यू कैन कम बैक टू द ग्लूटेन फूड्स. देन नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रूट्स विच यू शुड अवॉइड, दैट इज़ पियर हो गया या पीचेस हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया. यू शुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ दैट. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द फूड्स लाइफ स्टाइल चेंजेस which you should adapt. First of all, you should have proper sleep of 7 to 8 hours. रीज़न बीइंग जब भी हम लोग प्रॉपर स्लीप नहीं करते हैं, हम लोग का जो स्ट्रेस हार्मोन होता है लाइक कोर्टिसोल हार्मोन होता है जो हम लोग को अगेन इंटरफेयर करता है हार्मोन की प्रोडक्शन में. अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाएगा जिसके कारण आपको थायराइड की फंक्शनिंग में वापस प्रॉब्लम आएगी. देन वी विल टॉक अबाउट द रिफाइंड ऑयल्स विच वी आर यूजिंग नाउअडेज. ट्राई टू स्विच योर रिफाइंड ऑयल्स which are free from trans fat. Coconut oil which is seen very trending pattern में चल रहा है and which have seen कि thyroid patients में उसको कंज्यूम करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. So you can switch your oils to coconut oil और देसी घी और mustard seeds oil in your diet. Then you can have a coriander seeds water in the morning. रात को आप सोक करके रख दीजिए and in the morning you can have that boil करके अच्छा खासा and थोड़ा जब भी half quantity रह जाए you can consume that. So it's really gonna help you. And certain changes in diet you have to do is healthy lifestyle because अगर जितना आप लोग healthy lifestyle रखेंगे उतना ही आपको लाइक थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे and have the adequate amount of iodine in your diet. I'm not saying excessive, but yes, adequate amount of iodine is recommendable. So guys, hope you liked this video and don't forget to subscribe and like my YouTube channel, and thank you all for your love. Bye bye.